Students and friends, welcome back. Again, it's a new video with new phrases in Hindi, and we are going to translate them into English. And these are very common phrases we use in our speaking almost every day. So let's start. हम बोलते हैं ये बाजू में है या बगल में है, तो it's next to, जैसे मैंने बोला डॉक्टर का क्लिनिक पोस्ट ऑफिस के बगल में है ना, या बाजू में है, तो क्या बोलेंगे? द डॉक्टर्स क्लिनिक इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, लाइक दिस, नेक्स्ट टू। अगर थोड़ा पास में है तो क्लोज टू, नेक्स्ट टू जस्ट बगल में है। नेक्स्ट इज मेरा तुम्हारा हिसाब अब बराबर हुआ। इसका मतलब ना मुझे अब तुमसे कुछ लेना है ना मुझे तुम्हें कुछ देना है। इट मीन्स वी आर स्क्वायर नाउ। We are square now. अब हम बराबर है, हमारा हिसाब बराबर हो गया। एक दो से मैं निपट लूंगा, तो I will deal with one or two. I will deal with one or two. चैन की सांस लेना के लिए एक इडियोमेटिक वे होता है। जैसे मैंने चैन की सांस ली, तो पहले इसको समझ लीजिए, ही a sigh of relief हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सेंटेंस हम बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने उसकी तबीयत के बारे में जानकर मुझे चैन की सांस आई या मैंने चैन की सांस ली, तो आई heaved a sigh of relief after knowing that he was all right, ठीक है। I heaved a sigh of relief after knowing that he was all right. ठीक है। वह अपना सा मुंह लेकर रह गया, तो इसके लिए तो कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। मतलब कोई मायूस हो जाए, किसी के सामने कुछ आप ऐसी बात कर दो कि उसके पास कोई उसका उत्तर ना हो या वो शर्मिंदा महसूस करे, तब हम बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। तो इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, ही कट अ सॉरी फिगर when he was proved wrong. He cut a sorry figure when he was proved wrong. जब उसको wrong उसको गलत साबित किया गया, तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो he cut a sorry figure when he was proved wrong. दो और दो चार होते हैं, 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. आप निराश मत होइए। तो निराश करना तो होता है डिसअपॉइंट, लेकिन जब हम खुद होते हैं तो गेट प्लस V3 का यूज करते हैं होना के लिए। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, don't get disappointed. सकारात्मक सोचो।
या सकारात्मक बनो। तो सोचो, थिंक पॉजिटिवली या बी पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिवली या बी पॉजिटिव। ये भी बड़ा कॉमन फ्रेज है, चारों ओर पानी ही पानी था। तो देयर वॉज नथिंग बट वाटर ऑल अराउंड। देयर वॉज नथिंग बट water all there was nothing but water all around। अभी है ये थोड़ा एक्सक्लेमेटरी है, कितनी लापरवाही से तुमने कार चलाई। ठीक है, तो हाउ केयरलेसली यू ड्रोव दी कार। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन चाहिए हमको। हाउ केयरलेसली यू ड्रोव दी कार, इट वॉज नॉट गुड। यू शुड हैव बीन केयरफुल, आपको सावधान होना चाहिए था। ओके, so it was the video I have already made. I hope you like it. How are you, students and friends? Welcome back. It's a video for you. It's a new video here in that series, phrases Hindi to English. तो ये कुछ phrases हैं यहाँ पे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं वीडियोस बनाता आ रहा हूँ ऐसे सेंटेंसेस पर जो हम अपने स्पीकिंग में यूज करते हैं और बड़े कॉमन है, जिनको अगर हम यूज करें अपने स्पीकिंग में, प्रैक्टिस में, तो यू कैन बी एन एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। तो पहला सेंटेंस है, पहला फ्रेज है, यहां से हटो। ठीक है, इसको बना लेते हैं हम। तो रिक्वेस्ट में अगर आप बोल रहे हो तो प्लीज मूव फ्रॉम हियर, यहां से हटो, प्लीज मूव फ्रॉम हियर। ठीक है, सिंपल आप बोल सकते हैं। अपने कान बंद कर लो, तो प्लग योर ईयर्स। if you are afraid, or if that noise is getting on your nerves, please plug your ears। ठीक है, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। तो don't poke your nose into others' affairs। Don't poke your nose into others' affairs। Don't poke your nose into others' affairs। कपड़ों को अच्छे से निचोड़ लो, तो रिंग आउट होता है। ठीक है, प्लीज wring out the cloths properly। अपने काम से काम रखो। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। Please mind your own business। थोता चना बाजे घना means an empty vessel makes much noise।
empty vessel makes much noise. ये कहावत है, पावर है। धूता चना बाजेगा ना, मतलब जिसमें कोई दम ना हो मगर शोर शराबे से पता चले कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। An empty vessel makes much noise। तो जो खाली गगरी होती ना, अधकल गगरी छलकत जाए, लाइक दिस। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। A bad man quarrels with his tools। A bad man quarrels with his tools। अब ये होता है बिस्तर लगा लो, तो make your bed, make your bed। ठीक है, सिंपल है। रात भर तारे गिनना मतलब किसी परेशानी में होना, माइंड में कोई कंफ्यूजन होना, कोई परेशानी होना, तो स्लीपलेस नाइट। He passed a sleepless night। He passed a sleepless night। अच्छा, अब आटे दाल का भाव पता चलना। कहते हैं ना यार, तुम जब ये काम करोगे ना तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। टू कम अक्रॉस विद द रियलिटी, ना। तो इसके लिए हम कर सकते हैं टू कम अक्रॉस विद द रियलिटी। ठीक है, तो इसको बना सकते हैं आप सेंटेंस जैसे कि you will come across with the reality when you have a family। ठीक है, जब आपका परिवार होगा ना तब आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा। तो you will come across with the reality when you have your own family। तो इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। तो ये मैंने बनाए, आप इनको रिपीट करें, वीडियो को देखें बार बार, practice them into your speaking। Like this video, please like this video, share this video, subscribe to my channel if you haven't already, and you may contact me to have classes with me। My email ID and Skype ID is here in that video and below that video। Thanks for watching. Thank you।